ये है जी सेंट्रल आइलैंड ऑफ टोरंटो। हम इस वक्त खड़े हुए हैं जी यहाँ पे। ये जो है ये आइलैंड को ये वाला यहाँ से शिप जाती है। ये शिप यहाँ से जाके सेंट्रल आइलैंड में यहाँ पे जाके लगती है। फिर यहाँ से आप पूरे पार्क की बड़ा खूबसूरत पार्क है, वो सारे का सारा दिखाते हैं आपको। यहाँ से जाके फिर ये पार्क बने हुए हैं। इसके आगे यहाँ पे ये सैंड वगैरह है, ये सैंड है। और फिर वहाँ पे जाके सेंटर आइलैंड के वो टॉप पे जाके आप डेक पे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से पूरी लेक का नज़ारा होता है बड़ा ज़बरदस्त। जी, टोरंटो आइलैंड पे जाने के लिए ये एक टोरंटो आइलैंड के साथ ही ये मई से सितंबर तक चलने वाली लोकल कश्तियाँ हैं, जिन्हें पानी वाली टैक्सियाँ भी कहा जाता है। ये सिर्फ मई से सितंबर तक चलती हैं और ये यहाँ से आपको ले जाकर वो सामने वाले जजीरे पर सैर करवा के वापस ले आती हैं। इन लोकल कश्तियों का किराया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जबकि जो फेरीज़ है, जो गवर्नमेंट की अपनी फेरीज़ है, उसका किराया जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी मुनासिब है, इनसे बहुत ज़्यादा कम होता है। वो अभी आपको ये जैक लैटन फेरी टर्मिनल पे लेके जाते हैं। ये है जी जैक लैटन फेरी टर्मिनल। यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं। ये बोट आपको यहाँ से लेके जाएगी सेंट्रल आइलैंड में और इसका किराया अडल्ट का है $8.7 और बाकी सीनियर सिटीजन का 65 का सेपरेट है। ये चलती हैं जी सुबह 6:45 बजे से लेके रात 11 बजे तक। रात 11 बजे तक ये मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जाके वहाँ पे मुसाफिरों को छोड़कर भी आती हैं और मुसाफिरों को लेकर भी आती हैं। टोरंटो आइलैंड जो है ये तकरीबन 15 आइलैंड पर मुश्तमिल एक चैन है ओंटारियो लेक में, और ये कनाडा के तकरीबन साउथ एंड में वाक़या है और बिल्कुल CN टावर और जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बिल्कुल साथ ही है ये। आप CN टावर से पैदल चलकर भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आप फेरी पर बैठ के खूबसूरत टोरंटो का बेहतरीन नज़ारा कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि फेरी से टोरंटो आइलैंड तक जाते हुए आप ये सारे का सारा नज़ारा भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपनी साइकिल भी साथ लेके जा सकते हैं। वैसे तो साइकिल वहाँ से भी किराए पे मिल जाती हैं और वैसे इस आइलैंड को कार फ्री कम्युनिटी कहा गया और कार फ्री कम्युनिटी यहाँ पे रहती है जिनके पास किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं है। ये साइकिल्स पर भी अपना सारा सफ़र तय करते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. यहाँ पर आने के बाद पता चला कि आज कोई त्यौहार है यहाँ पे इंडिया का। फेस्टिवल ऑफ इंडिया यहाँ पे मनाया जा रहा है 16 और 17 तारीख के लिए। आज 16 तारीख है, कल भी होगा। ये कोशिश करूँगा कि कल भी आऊँ। ये हैं जी फेस्टिवल इनकी। ये आज इसी वजह से आपको कल्चरल लिबास में लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इंडियन, कि यहाँ पे इनका त्यौहार कोई बता रहे हैं कि
जगन्नाथ डे कोई कहे इस तरह का है। ये जी फेस्टिवल 50th एनिवर्सरी पे है ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ले जी यहाँ से अब आप नज़ारे करें टोरंटो आइलैंड के। और ये जो वॉकिंग टूर है ये मुश्तमिल है यहाँ पे खेल के जितने भी मैदान हैं, पार्क हैं, लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कश्तियों की सैर कर रहे हैं। आपको लास्ट डेक जो है जहाँ से पूरे लेक का नज़ारा आता है वहाँ तक लेके जाऊँगा। इतनी देर में आप देखें यहाँ के लोगों की चहलकदमियाँ। what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. टंटो आइलैंड से वापसी पर अगर आपने डूबते सूरज का नज़ारा नहीं देखा तो आप सही तरीके से टंटो आइलैंड का लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे। अब वापसी के लिए ये सारे अपनी शिप का इंतज़ार कर रहे हैं और सारे के सारे लाइन बना के खड़े हुए हैं जो कमो बेश 600-700 मीटर लंबी है। एक एक करके बोट यहाँ से वापस हमें टोरंटो पे ले जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।